हाय साक्षी, कैसे हो आप? I'm good, good. How are you, Tarun? आई एम ऑल्सो गुड। तो साक्षी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी आप कौन सी पोजीशन में काम कर रहे हो, वो सब चीज़ें। बेसिकली आप अपना इंट्रो बताइए थोड़ा। Okay. So I am from Indore, Madhya Pradesh. It's a place with lots of food. And currently, I am a software engineer too at Dell Technologies. I have around 2 years, 6 month experience, and I work on full stack development over here. While I also work on automation like Selenium, Titanium. And currently, I'm working on integrating Spring Boot with Selenium to for our project. And that was like professional side of me. While on personal side, I like to travel, explore new places, try new food, meet new people. So that's about me. ओके। तो बहुत बार स्टूडेंट को ये डाउट आता है जब वो कॉलेज में होते हैं कि हमें किस तरीके से लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना चाहिए। तो वो सब के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कैसे किया था और कैसे एक स्टूडेंट को करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी फर्स्ट ईयर में है अपने, तो आई सजेस्ट हम एक्सप्लोर करो। क्लब्स लाइक बहुत सारे क्लब्स होते हैं, कंप्यूटर के क्लब्स होते हैं, कोई कोई रोबोटिक क्लब्स भी होते हैं, फिर इस टाइप ऑफ क्लब्स होते हैं। तो एक्सप्लोर करो हर क्लब में जाके थोड़ा सा क्या आपका क्या इंटरेस्ट है। सीनियर से बातें करो, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल अ लॉट। आई रियली सजेस्ट दैट. And using clubs only, actually I developed a game using Unity CD, and it was like a game which I developed, and I went with that game to IIT Bombay as well, for the project. They have IIT more Indigo, right? So we went there as well. So I first suggest go explore what you like. While on the technology aspect, I will really suggest, first of all, first foremost thing, get a coding language. Learn a basic coding language, either it be Java, C++, or Python. I suggest either three of them. You can learn whatever you like, but using Java, C++, or Python, you can develop further projects as well. So it will be not just helpful for your coding or DSS data structures in that, but it will be helpful for other projects as well. So first and foremost thing, get a grip, like basic concepts of oops and everything. So learn Java. And then after once you're clear with Java, I suggest you start developing few projects. Either you choose web development, app development, learn either of these things. So if you're learning web development, learn basic HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, and then learn Java, how you can using Java, how you can make a website as well. And then once create a static generic website. For me, I think the best experience, like the best way to learn is using creating a projects. Right. So first of all, create projects, make it static. And once you are done with static, try using Dawn database as well, like SQL and everything, and try to make it dynamic. Because it's not just going to help you learn, it's going to help you in your resume as well. So second thing is, first is learn Java, some coding language for your DSA. Second thing is learn web development or something. Third, foremost thing, which now I think students should learn is using Copilot. Like how you can use Copilot in Excel or any Microsoft Office tools like Excel, Word. How you can at least use in that, but how you can use Copilot in your coding as well. Like we have Git Copilot as well, and we have in Visual Studio Copilot. Try to use Copilot because every company is now looking forward for generative AI, open AI, how they can use in their company. So first learn how to use, and then you can maybe learn how to implement as well. So start using the Copilot for your stuff as well. And the fourth technology which I learned, and I think it's very helpful, is first of all, learn Python. It's like you get it's all the things which you can explore. So learn Python, and in Python, learn how to filter data, data filtering and everything. When using that, learn basic machine learning libraries, I'll suggest, because once you have a basic knowledge of that, now if a company is recruiting for that, so you will be at least eligible, and you can see, yeah, I know basic knowledge of it. Okay. So company looks for that as well. So learn basic of Python, data structures, and machine learning.
So in my college days, I developed a project in machine learning, which was to detect a disease using RBC, like using your red blood cells and white blood cells, using machine learning and computer vision. So create a basic projects in that, and you'll be good to go. Okay, so basically it will be a model like that, right? Yes, Based on the data, it will predict. yes. ओके, सो आपने काफ़ी कुछ बताया यार कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। बट इसमें ये भी होता है कि स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं और किसी में भी डेप्थ में नहीं जा पाते। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि यार जो भी कर रहे हो वो डेप्थ में करो, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ें कर लोगे, 4 लैंग्वेज पढ़ लोगे और आपको डेप्थ में कुछ नहीं आता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि कंपनीज चाहती है कि एक एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके साथ में जैसे आपने बताया कि आप डेल में काम कर रहे हो, तो डेल के इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बताओ कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है एज ए फ्रेशर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वॉट एवर मे बी, यू कैन टेल। So, for me, Dell came as a internship for summer internship. Dell, I came my college, ma'am. So I did a complete process. वो कैसा था? First of all, it was a basic screening round based on your CGPA. So few people it was graded on the basis of. After that, we had actual round 1. So it was based on my coding knowledge only. So it was a basic data structures knowledge. On that basis, it was a MCQ based round. Okay. So over there, it was not an online, technical interview face to face or something. It was a MCQ based round. So we did that, and then after that we had a hackathon. So around 80 people were selected from that round 1. So we had a hackathon where we were given the problem statement 10 days ago, before our hackathon day. So 10 days before, we were given some problem statements which were related to Dell only, like recommendation search, like how you can recommend a better laptop to a customer or a website. So they were made various hackathon. There were around 5 problem statement which they provided us. So once like we have to learn the technology, we don't have to develop a product in those 10 days. Just learn and get an idea like how you will do and learn the basic technologies for that. And then there were 2 days, like on the D-Day, we got 2 days. It was a complete 48 hours hackathon. Okay. So you can, it was complete like a hackathon to like the effect. So on those 2 days, you have to code and develop a model, which you can give a demo on the D-Day. So after those 2 days, you have to give a demo of that model, like a website, a model, anything. So it will be so we were like 4 people, right? So you should like we had to make a team where one can do ML task, one was doing front end and everything. So we were having a demo, and after that demo, it was not sure, like it was not definite all the 4 people will get selected, only 3 of them will get selected. John, how much, as you said earlier, how much you have a knowledge on what thing you did. Like if they ask a question, you should have an in-depth knowledge how you did it. You should not like just pick the code from Google and not know about it. So how in-depth knowledge you have, and they also focus on which is team spirit. Like you don't leave your team member and just think about your you should get selected and not my team members. You're cutting his point. No. So that was also one of the big point in them. So after this demo, around I guess 25 or 25 people were selected after this hackathon. And after this hackathon, we had a basic HR round. So it was simple questions only, like so you have to be true to yourself in that HR round. You can't brag about something, that you're so good, like you have so good qualities and everything, and then they somehow catch you up. So be true to yourself in that HR round. And so from that, I think 15 people, after that HR round, 15 people were selected for Dell. That was a complete Dell process for us. Okay. So ये तो आपने जो बताया है वो ऑन कैंपस में हुआ था आपके साथ। अगर कोई लेटरल एंट्री ज्वाइन हो रहा है या एज ए फ्रेशर कोई ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहा है, तो उसमें क्या राउंड्स होते हैं? क्योंकि उसमें तो हैकाथॉन होता नहीं होगा, उसमें तो नॉर्मली राउंड्स होते होंगे, डीएसए राउंड। तो उसमें कितने राउंड्स होते हैं, क्या होता है? अगर आपको पता है तो थोड़ा उसके बारे में एलुबरेट कीजिए। So see,
हर पोजीशंस के लिए थोड़ा डिफर करेगा ऑब्वियसली। सो सबसे पहले तो वही होता है कि आपका एक टेक्निकल राउंड होता है, कोडिंग राउंड, जिसमें आपको लिखने का बोलते हैं, लाइक अ रिटन कोडिंग राउंड, लाइक अ हैकर रैंक जैसा कुछ सो होगा। राइट। एंड देन यू हैव अ technical round over there. Like face to face technical round will be ours. Will be given to you. So you have to if you clear those rounds, you have I guess one more round, and then you have HR round. So basic like that. सो Yes. डेल कंपनी को क्रैक करने के लिए डीएसए कितना बड़ा रोल प्ले करता है? I guess even if right now as a I am the software engineer too as well. But if I go for some other company as well or anywhere, they'll still ask me DSA. Like even if I have so many projects in my resume and everything. So I think in interview process, DSA plays a big part. Like before asking about your projects and everything, they'll ask you to clear at least a technical round, written coding round, or a technical interview round. So after that, we have a project like where they ask about your projects. But before you have to be good on your DS. So even if you're like a software engineer or something, you have to be like on the always on the mark. DSA. You don't forget it. वर्क लाइफ So बैलेंस please, कैसा है डेल में? that is very good question. So I'll see in Dell work culture I define in 3 terms is nurturing, innovative, and vibrant. So I'll tell you why I'm describing in those words. So first of all, nurturing is in Dell, you're not just Dell is not just thinking about their growth, but it also focuses on their people as well. So there are various programs using which you can upskill yourself all the time. So let's say for me, many people don't know that for college graduates in Dell, we have ITDP program, that is IT Development Program. So it's a 2-year program for college graduates. So over here, you get various opportunities to upskill yourself. Like they sponsor your upskill and everything. While over here, like using that program, you get to connect with many other college graduates all over the world. So you get to learn a lot in there. While I said innovation. So Dell focuses on innovation a lot. Like other than your work, they are encouraging you to do some innovation things. And like in Dell, there is complete transparency. You can talk to any VPs, directors easily. Like I know many times. Like I have discussion with them one-to-one on discussing like what is Dell's future goal and everything. So it's very transparent and innovative. While other than professional side, we have lot of off-sites, lot of parties and games, everything. It goes on so that it's like work culture is balanced. And the best thing I'll say about Dell is I'm like seeing in my friends' companies is like they pressurize them a lot. Like if their work is not done or something like that. So toxic culture and negative environment, I'll surely say Dell lets you relax. And even if you have some issues or something, if you're stuck in some code or some issues, so there we have a community where we can ask this question and then help us. So it's Dell focuses on winning together. So it helps us a lot. Like, and there is no toxic culture. It's all positive environment in Dell. So it's quite fun and relaxing. ओके, सो जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम सभी को जानना होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेली रूटीन क्या होता है। तो आप बताइए कि आपका रूटीन क्या है डेल के अंदर? Okay, so I'll tell my routine when I go to office. So right now we have a hybrid work environment. So sometimes we go, sometimes we don't. So on the days when I go office, so I'm in Hyderabad. My work location is Hyderabad. So first of all, Hyderabad traffic काफी ज्यादा रहता है, तो मेरे को पहले ही निकलना पड़ता है. Even though my home is like nearby, but मेरे को आधे घंटे पहले ही निकलना पड़ता है. And I have my daily stand up at 10:30. So you for every every engineer, everyone, you have a stand up for sure. जहाँ पे आपको मतलब अपडेट देता रहेगा, आप रिक्वायरमेंट्स बताएंगे आपको कि क्या करना है पूरे दिन भर में आज एंड एवरीथिंग. So you have a daily stand up. So at 10:30 I have a daily stand up. And once you go to office, like after 10:30 I interact with a few other people. It's like my team members or someone.
and then I work till around 1, and then we have lunch. While my day ends at around 6 or 7:30, sometimes it ends. So we have this badminton area in Dell. Mhm. So after 7:30 or 7, I said, right, I have a ITDP group as well, which is like all the college graduates or something. So we or other Dell team members, we gather up there and we play badminton. Oh, We have various games and TT, so we play those things after our work hours. And yeah, that's how our day ends, and then back to home. तो अब हमें बताइए आपकी जो रियल वर्क रहता है आपका कंपनी के अंदर या किसी भी इंजीनियर का होता है और जो इंटरव्यू में चीज़ें पूछी जाती है वो क्या डिफरेंट होती है या सच में इंटरव्यू वाली चीज़ें काम आ रही होती है आपको डेली रूटीन में? So first of all, इंटरव्यू में आपसे डेटा स्ट्रक्चर का काफी ज्यादा लाइक परसेंटेज रहता है, एंड दे फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स अ लॉट. सो आई थिंक इतना भी हम यूज नहीं करते. लाइक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स का ये है कि आपको कोडिंग आना चाहिए, आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो आप उसको टैकल कर सकते हो, आपको लॉजिकल बिल्डिंग भी देखते हो उसमें. सो आई एग्री कि लॉजिकल बिल्डिंग यूज हो रहा है हमारा, बट वो डीपी एंड एवरीथिंग वी डोंट यूज दोस थिंग्स. आई स्पेसिफिकली डोंट यूज दोस थिंग्स. आई सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज थिंक कि आपको प्रोजेक्ट जो आपको इंटरेस्ट है वो भी आपको थोड़ा अच्छे लाइक उसमें बिल्डअप करना चाहिए. बिकॉज वंस यू गेट इनटू ऑफिस, then you should you can work in that वेबसाइट डेवलपर हो, जो भी आपको प्रोजेक्ट आया अब उसमें काम कर पाओ, इसलिए आपको पहले से थोड़ा नॉलेज होना चाहिए था कि आप एटलीस्ट कंफर्टेबली फिट हो पाओ उसमें. सो आई से कि जितना हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पूछते हैं उतना तो हम यूज नहीं करते हैं. एंड तो सब आई फील लाइक कि हमसे जितना इंटरव्यू प्रोसेस में पूछा जाता ना कि आपको ये सब आना चाहिए आना चाहिए, एट द एंड आप जाके गिटहब से या फिर स्टैक ओवरफ्लो से ही उठा के यूज करोगे चीजें. तो इतना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता जितना आपको इंटरव्यू प्रोसेस रहता है. हम्म. नहीं, मेरा एंगल थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहता है कि जैसे डीएसए की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कंपनीज में यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो आप डेटाबेस की बात करो, लोड बैलेंसिंग की बात करो, तो उसके अंदर भी एल्गोरिथम लगी होती है. जैसे डेटाबेस भी आपका बाइनरी सर्च करके कुछ क्वेरी का इनपुट लेके आ रहा होता है, आउटपुट लेके आ रहा होता है. वैसे ही लोड बैलेंसर के अंदर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की आप बात करो तो ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम रहती है जो उसके अंदर लगी होती है. तो अगर आपको आती है तो आपको पता होगा कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आप ट्यून कर सकते हो चीज़ों को. तो काम आता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि डीएसए काम नहीं आता है. अगर आई आपको एग्री. ऑप्टिमाइज करना है, कुछ अच्छी चीज़ें बनाना है, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिफर करता है. जैसे मेरी लास्ट कंपनी में वो लोग मैप के प्रोजेक्ट पे यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे आपकी डिस्ट्रा एल्गोरिथम भी काम आ रही थी, शॉर्टेस्ट पाथ भी वो लोग निकाल रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें कर रहे थे वो लोग. तो वहाँ पे आपको हर एल्गोरिथम दिख रही थी कि यार यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है. आई एग्री कि लाइक मैप्स इन सब में ग्राफ और ये सब यूज हो रहा है, बट इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट. इन माय फर्स्ट मुझे सीखना पड़ा थोड़ा ज्यादा. लाइक मेरे को डीएस इतना यूज नहीं हुआ, मुझे दूसरी चीजें सीखनी पड़ी. ओके, सो बट आई एग्री यू हाँ, लाइक डीएस या गो अहेड. सो आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे, मतलब उनको कैसे डेल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अगर उनके कॉलेज में आती है कंपनी, या ऑफ कैंपस उनको ट्राई करना है डेल में, तो क्या रेलिवेंट चीज़ें जो उनको आना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो पाए डेल के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? First of all, I'll suggest to everyone, like not just if they want to get into Dell, try to solve real world problems. या आप थोड़ा हाँ, लेकिन वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. जो आपको लग रहा है कि यार यूट्यूब में कुछ इशू आ रहा है, तो हाउ कैन आई ट्राई टू सॉल्व दोस थिंग्स एज वेल. इफ यू कैन डू इट देन इट्स गुड. लाइक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे रहा है कि जो मुझे सेटिस्फाई करता है ऑल द जर्नी अलॉन्ग द जर्नी इज कि इन सम वे इफ आई कैन हेल्प other people using my technology, that's like that technology is my only power. So if I can help other people, so that will be like that gets me along. So solve a real world problem. And चीज़ों को डेल में आना है सपोज, वो तो ये से करे ही सही. बट एक और है कि आप प्रोजेक्ट जब बिल्ड कर रहे हो ना, तो स्पेसिफिक टू लाइक हर कंपनी का, सपोज आपको नेटफ्लिक्स में जाना है फिर डेल में जाना है, तो आप ऐसा कुछ देखो कि उनकी जो वेबसाइट में है या कुछ है, लेट्स से उनकी वेबसाइट में है नेटफ्लिक्स या डेल की वेबसाइट में कुछ इशू दिखा, सो यू डेवलप समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि आप उसको इम्प्रूव करके कुछ बनाओ जिससे आपका यूनिकनेस बढ़ेगा. हर कोई जेनेरिक प्रोजेक्ट तो बिल्ड करेगा ही,
तो आपका यूँ है क्या कि आपने वो देखा, आइडेंटिफाई किया एंड देन यू बिल्ड अपॉन दैट, सो दैट विल बी अ आई कैचिंग फॉर द इंटरव्यूअर एज़ वेल। एंड देन सबसे बड़ा यही है कि आप लाइक वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ट्राई करो। लाइक आप एक मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट में बना के, तो मशीन लर्निंग लाइक फास्ट एपीआई वेबसाइट से इंटीग्रेट करके कुछ बना सके। तो प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें एंड डीएसए पे साइड फोकस, तो डीएसए पे कभी फोकस नहीं रहना चाहिए बिकॉज़ इट्स लाइक इनिशियल राउंड्स में वही रहेगा, तो वो तो रहेगा। तो आपने बहुत सारे इंसाइट्स शेयर करे बहुत ही कम टाइम में, जो कि बहुत ही रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके साक्षी। थैंक यू सो मच। Thank you for having me as well. I hope I can inspire or mentor some students.